students, again Avinash is here to discuss about the second series of the Constitution. In last series we have discussed why we need Constitution. Today we will discuss what is Constitution, what is constitutionalism. In the last video we have discussed the origin of the society or the origin of the states, because only society and states need constitution, and we have discussed about that a human is a basic unit of the society. I will say social contract theory of origin of the states. A state came into existence, and to govern ourselves we have elected our government. The government was working on such rules, such basic rules. Those basic rules are called as compiled. If they are compiled, are called as constitution. Today we will discuss what is constitution. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में हम कहते हैं संविधान. हिंदी में हम कहते हैं संविधान, उर्दू में हम कहते हैं आईन, और अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. तो संविधान, सम मीन्स, सम का अर्थ होता है सबके लिए जो एक समान. विधान माने कानून या लॉ या विधि की बात करते हैं. तो ऐसी विधियां जो किसी भी देश काल परिस्थिति में सबके लिए एक समान हो, इसको हम कहते हैं संविधान. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा जीता जागती ऐसी बॉडी है जो बेसिक रूल्स का को हमें जब कंपाइल कर लेते हैं. एक बेसिक रूल जिनसे सरकारें चलती हैं, जिनसे हमारी गवर्नमेंट गवर्न होती है, जिनसे हम गवर्न होते हैं. तो संविधान वो चीज जो हमारी सरकार को चलाती है, जिसके थ्रू हम अपनी सरकार को चुनते हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार को चुनते हैं. संविधान उन देशों का भी होता है जहां पर लोकतंत्र नहीं होता. अगर हम चीन की बात करते हैं, चीन में कोई लोकतंत्र नहीं है, साम्यवादी शासन व्यवस्था है, फिर भी संविधान है. तो संविधान ऐसा विधान जो सभी के लिए एक बराबर हो, ऐसा विधान कहलाता है संविधान. 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होता है, East India Company has been established in 600 in England. When it came in India and it ruled over India after the Battle of Plassey, it ruled India, and you can find so much discrimination in India. After the Battle of Plassey, the company has started its revenue system to collect revenue from Bengal, Bihar and Odisha. And after that, after the Battle of Plassey, we have traveled a lot of years, and we see in 1857 the first battle of Indian people. Some of the writers used to say the mutiny of sepoys, but we find in that every part of the society and every part of the state is taking part in that mutiny. And the sepoys started
the mutiny and they declared Bahadur Shah Zafar as their crown. The next point, how Indian constitution has been evolved. We are discussing that Indian constitution, I am telling you that evolved, the word evolved, evolution. If we will talk about the Indian constitution, it has taken a lot of time to evolve. In Indian constitution, we can find the things, the matter from the beginning of the India. From Jambudwip to India. एक ऐसी ग्लोरी, एक ऐसी महान गाथा भारतीय संविधान जो भारत के शुरुआत से लेकर अब तक भारत की महान गाथा को कहता है, इस महान कथा को आगे लेकर बढ़ता है. तो after the revolution of 1857, the king of the England, the queen of the England, has taken the reign by the East India Company on India. They have made some reforming laws that has been started from the Regulating Act to the Indian Independence Act 1947. जो हमने युद्ध लड़ा, 200 वर्षों की जो गुलामी थी, उसमें हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो युद्ध लड़े, अपने उन आदर्शों पे लड़े. हमारे आदर्श क्या थे? What were our आइडियलिज्म, हमारे आइडियल कौन थे? क्यों हम उनसे युद्ध किए? क्यों हमने उनसे अपना स्वराज लिया? हमने उनसे हमेशा स्वराज की बात की. क्यों ऐसा कि हमारे देश में एक आईन हो, हमारे देश में एक संविधान हो, हम अपने आप को स्वयं शासित कर सकें. किसी और से शासित होना और स्वयं में शासित होना, दोनों में बड़ा फर्क है. तो जब हम अपने शासन की बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं कि हमारा एक संविधान होना चाहिए. हमारा अगला टॉपिक है, इज कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्या संविधान को एक हम जीते जाते प्राणी की तरह कह सकते हैं? दिस टॉपिक इज मोस्ट डिबेटेबल nowadays in India. Is constitution a living organism? Some time ago I used a word evolution for Indian constitution. Every living organism has the tendency of evolution. Every living organism. So I am talking about, is constitution a living organism? Constitution क्या एक it's a anthology of the rules. It's a anthology of rules, a set of laws, a set of basic laws. If it is a set of basic laws, how can we say that constitution is a living organism? Organism has a tendency to move, to eat, to breathe, but constitution doesn't have such tendency to so. But literally, it has a tendency to move. It has a tendency to show the emotions. It has a tendency to breathe, inform of us. When in Indian Constitution, its first part, the preamble, we say that we the people of India. What is Constitution? And who made the Constitution? For whom it has been made? We made our Constitution
For us it has been made. और इस भारतीय संविधान को हम अपने आप को अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान है किसके लिए? हमारे लिए, हमारे रूप में। इट इज फॉर अस, सो वी आर द लिविंग पीपल्स। इफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर अस, it means it is also a living organism. From time to time you can find a lot of amendments in the Indian Constitution. As time goes on, Indian Constitution amends itself. And the next, it shows the emotion of the Indian people. It shows the struggle of the Indian people. Since 1600, when Britishers came to our country, they ruled over our country. So after a lot of struggle, we are now in such situation that we enjoy our right. In Indian Constitution, we have fundamental rights, we have fundamental duties, we have the directive principles of the state policy. Everything in India is governed by such basic rules which is written in our Indian Constitution. As a government, it governs ourselves. It says something to ourselves that what is the goal and what is the aim of the such state like India. Our ideal is given in such set of documents. It is not only a set of documents, it is a living organism. हमारे सपनों के भारत का संविधान है, हमारे सपनों के भारत का आईन है, हमारे सपनों का भारत कैसा होगा ये संविधान में लिखा है। हमारी राज्य व्यवस्था कैसी होगी, हमारे संविधान में लिखा है कि हमारी राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा हमारा देश। तो हर सपना जो हम भारत को के लिए संजो कर रखते हैं, उन सपनों का एक जो हमने इकट्ठा कर रखा है, उन सपनों हमारे उन हमारे आदर्शवाद को दिखाता है कि हमारा भारतीय संविधान। अगली जो हम बात करेंगे, sources of Indian Constitution. It's a very vast topic. Two more things. Today I will, in short, we will discuss the Indian Act 1935 and the Indian Act 1919 are two major sources of the Indian Constitution. Now, I will discuss again that how Indian Constitution has got its present format, its present form. It will be discussed in our next topic. That the topic will be sources of Indian Constitution. This topic will be discussed on the very next day. So I will say you, please read the topic. Is Indian Constitution a living organism? Thank you.